Okay, good evening. I am Sibasis. Today my point of discussion will be torque in uniform electric field. So try to understand what I am going to calculate here. Suppose there is a uniform electric field is here. So you know uniform electric field will be represented by parallel equispaced line. Suppose this is uniform electric field. So in the uniform electric field, let us there is a dipole. All of you know the dipole means there is two equal and opposite charge separated by a distance. So let us this is a minus q charge and suppose this is q charge and the length of the dipole let us 2l. 2l will be the length of the dipole. Length of the dipole. So as it is plus q charge, so all of you know to the plus q charge, the force will act along the direction of electric field and the force is equal to F is equal to Q into E. So there is a force act in this direction, that force is equal to QE. Similarly, to the minus charge there is a force, again the force opposite to the direction of electric field and this force is equal to again QE. That means I can say to the dipole, two equal opposite force act on it. So the net force, so the net force on the dipole is equal to 0. Net force is equal to 0. But because of this, there is a torque. Because this force is tried to pull in this direction and this force will try to pull in this direction. So obviously the dipole will rotate. That means as the net force is equal to 0 implies that there is no translatory motion. So no translatory motion. But there is some rotational motion. No translatory motion will be there. But there is some rotational motion. But there is some rotational motion. And this rotational motion will be calculated by a factor. The factor is called torque. So torque will calculate the rotational motion of a dipole. So there is ROTI, sorry, rotational motions. And this rotational motion is calculated by a quantity called torque. So the torque again is a vector quantity as it is moving over here about this point. So obviously the torque will be at this point will be downward. Why? Because if you rotate your right hand from this direction towards this along this arrow mark, then obviously the screw will pointing to the downward. So the torque vector will moving to the downward because torque is an axial vector. So torque is an axial vector. Again, the torque is a vector which is perpendicular to this force, and obviously this is minus q ru plus q ku gote vector जाउथियो प्ले से vector को हमें की vector कहबा हमें कहबा से vector ku p vector means dipole. So let us initially this angle is equal to theta. Then what is theta pile? Theta hala electric field how p vector vitare angle. Theta kono electric field how p vector vitare jo angle seita ko mu कहली pile theta. What is theta? Theta is the angle between electric field and dipole moment with the angle la seta theta. So torque definite torque is again vector quantity. So as torque is a vector quantity, it have a direction. In this case, the direction is downward. Again, the downward direction is simply represented by this cross mark. Again, torque formula magnitude होला ले कोन कहि परिबी force into perpendicular distance. Into perpendicular distance. So in this case, the value of force is equal to QE into perpendicular distance. Perpendicular distance এই কেস রে কেমতি ভাই মু কইবি আকু extend करिबी एई जगह আকু भी extend क सो मु कहि पिरी मने कर आ नाम करली a आ नाम करली b आ नाम करली c ताले मु कहि परि पिले bc हला perpendicular distance लिखिए bc हला perpendicular distance again it direction quad पिले भीतर. Now look, this is a rectangle triangle. So triangle ABC is a rectangle triangle. In triangle ABC, I can say sin theta is equal to P by H. Pile P hela eti kiye? P hela BC. So P hela BC. H kiye? Pile H la AC. AC mane kona? Length of the dipole. The length of the dipole is equal to 2L. So from that I can say my BC
is equal to 2L sin theta. So the value of VC is equal to 2L sin theta. So by putting the value of VC, that is 2L sin theta, over here, I can say it is QE into 2L sin theta. Again, the direction the quad direction alla bhitru. That means pile mu janichi 2LQ is equal to P. So P raw magnitudes is equal to LQ into it is electric field. mu kahi paribi electric field raw magnitude. तापर कौन पिले कहू जेठी sin theta. तापर कहू छी ये सब जिंस जेतु रे जे वेक्टर क्वांटिटी सब कुआडे पिले भितरु. सो मु आकु कहि परिबी P cross E. आ कोन कहि परिबी पिले P cross E. So P cross E is equal to torque. So finally I can say torque is a vector quantity. So torque is a vector quantity. In general, I can represent that by using P cross E. Play ए जगह ये खाली into थिला, ए जगह ये into थिला, ए जगह ये कौन लगे cross product है गला. So P cross E, that is torque. Torque will explain the rotational behavior of the dipole. So dipole केते बुलिबो से कहा द्वारा रिप्रेजेंट करा जिवो प्लेस कहा द्वारा रिप्रेजेंट करा जिसे torque द्वारा रिप्रेजेंट करा जिवो. एठी प्ले किछि केसेस आसीबो. There are some cases I am going to discuss here. So when the torque is maximum, when the torque is stable, and when the torque is unstable. Again repeat करूची. तमे stable unstable विषय पिले जानि थो. जदि मु गोटे particle को slightly displace करिवि, again the particle will back to its original position, then it is called stable equilibrium. Now we look at here. So हम कहूची एई केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड याड है. यदि एई केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड याड है, मोरी डाइपोल पिले रखिची एमती. So my dipole will be like this. Initially the dipole kete angle kortla theta. Clear? Initially the dipole making an angle theta. Vartman case 1 mu कहବାକୁ चाहूची. Case 1, if theta is equal to 0, जदि theta 0 हुए ताले से प्रकार डायग्राम पिले केमती हो देखो. कहबी यार इलेक्ट्रिक फील्ड नो इशू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एमती रहिबो. एबे मु डाइपोल टाको एमती रखिबी. एठी कहबी माइनस क्यू चार्ज, एठी कहबी क्यू चार्ज. सो डाइपोल मोमेंट र दिगो एबे किंदे हो पिले एमती हो. सो एमती हो ने एटा p कैप र दिगो. ये तो ऑलरेडी e कैप र थिबो e वेक्टर. सो वर्तमान में e वेक्टर और p वेक्टर भीतर एंगल केते पिले 0 डिग्री. एंगल 0 डिग्री. ताले जदि एंगल 0 डिग्री हबो वर्तमान में आकु फोर्स केमते लगे ई जगह रे q यार्ड है, एई जगह रे q यार्ड है. नाउ नेट फोर्स is equal to 0. Now net force is equal to 0. Ebe dipole bulibo ki. Now torque also 0. So in this case torque is 0 and F net is equal to 0. जदि मु dipole को slightly suppose displace करूची, suppose एमती slightly rotate करूची, जदि मु slightly rotate करूची force यार्ड आसीबो. एई जगह रे भी कोन पिले force यार्ड आसीबो. पुनी dipole टा यार्ड बुलिया को चेष्टा करियो ना, initial position को फेरी पाया को चेष्टा करियो. If I slightly displace the dipole, again dipole try to tend to the original position. That means the dipole is in stable equilibrium. So when theta is equal to 0, your dipole in stable equilibrium. In stable equilibrium. केते बेले जेते बेले थीटा 0 होला. Similarly case 2 पिले एटी डायग्राम टा कोची मने कर ये हला इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके ये किए ये हला इलेक्ट्रिक फील्ड. मने कर मोरी डाइपोल टा ई प्रकार प्लेस हेची. जो जगह रे ये छिपिले प्लस q आ एठी अछि पिले माइनस q. ताले एबे माइनस q रे प्लस q आडू एबे एटा कहार दिग हबो. एटा डाइपोल मोमेंट र दिग हबो. वर्तमान पई मु कहि परबी इलेक्ट्रिक फील्ड आ डाइपोल भीतर पिले एंगल केते, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. जदि वर्तमान मु डाइपोल टाको स्लाइटली रिप्लेस. अच्छा ए केस रे पुनी देखो पिले माइनस q ना, ताले फोर्स कुआडे याडे फोर्स केते qe. एई जगह रे पिले फोर्स याडे केते सेम qe इक्वल अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. सो नेट फोर्स केते हबो एई केस रे भी हबो नेट फोर्स 0. एबे डाइपोल बुलिबो की नो, एई केस रे डाइपोल बुलिबो नि. डाइपोल सेते बेले बुलिबो जदि किछि दीटा इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि किछि एंगल करी रहइबो. In this case the angle is equal to in the same line, they are in the same line, so dipole will not rotate. That means torque is equal to kete, torque is equal to 0. Jodi mu slightly displace kare, for example I am taking now another color. Look, I am taking another color. mane kar mu dipole ku slightly empty displace kali, tale ethi asla minus q, ethi asla pile q. jehetu ethi minus q pile yard bulibo,
याडे कौन पड़िवो फोर्स पड़िवो एठी कुआडे फोर्स पड़िवो याडे फोर्स पड़िवो वर्तमान डाइपोल जेतु याडे फोर्स पकु याडे फोर्स पकु डाइपोल टोटल बुली जिवो डाइपोल टोटल बुली की एई जगह को पिले केते आस जिवो एई जगह को क्यू आस जिवो आ एई जगह केते आस जिवो पिले एई जगह को माइनस क्यू काहे ये क्यू चाहिबो एई पटु को आसिया पई ए माइनस क्यू चाहिबो एई पटु को आसिया टोटल बुली जिवो जे टोटल बुलिवो तो हमर डाइपोल रोटेट हबो जे डाइपोल रोटेट पूरा हे जाउची तार निजर ओरिजिनल पोजीशन पेरी पाउनी ताहले हम केस 2 जेतळ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री थिबो हम डाइपोल को कहया पिले unstable equilibrium that means the dipole is in unstable equilibrium is in unstable sorry is in unstable equilibrium प्रथम केस जेतळ थीटा इज इक्वल टू 0 थिला प्लस तळ हमर डाइपोल थिला स्टेबल इक्विलिब्रियम जेतळ थीटा इज इक्वल टू कते हे गला 180 डिग्री हे गला सेतळ डाइपोल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एथरे आ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पचारछन्दी बहुत थर पचारे फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क मैक्सिमम व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क सो अगेन मु टॉर्क रे एक्सप्रेशन के लिए पुन लिखिया चाहूची टॉर्क रे एक्सप्रेशन हला P क्रॉस E टॉर्क रे एक्सप्रेशन हला पिले P क्रॉस E ताको दि मु ओपन करबी मु कहि परिबी P mod E mod into sin theta obviously ता डायरेक्शन तो सदाले P क्रॉस E ऊपर डिपेंड करिवो एबे मते पचार छी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू यदि मैक्सिमम वैल्यू कथा पचार जियो ना ताले मु कोन करछि टॉर्क रो मैग्नीट्यूड कथा चर्चा करछि ताल टॉर्क रो मैग्नीट्यूड माने P क्रॉस E रो मैग्नीट्यूड दैट इज P sin थीटा सो ए केस रे P भी फिक्स E भी फिक्स ताले गोटे वेरिएबल के बिले थीटा ताले टॉर्क मैक्सिमम हेबी जदि मु कोन पाइबी जदि मु sin थीटा टा कोन हो बिले मैक्सिमम हबो आ sin थीटा टा मैक्सिमम हबो जदि थीटा केते हुए थीटा यदि 90 डिग्री हुए यदि थीटा 90 डिग्री हबो ताले sin थीटा रो मूल्य 1 हबो ओके ताले sin थीटा रो मूल्य 1 हबो आ ड्यूरिंग दैट टाइम मु कोन पाइबले टॉर्क मैक्सिमम पाइब एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू p वेक्टर mod into E vector mod you know what is P vector you know what is E vector so this is nothing but your torque maximum ओके आ गोटे छोटा शॉर्ट क्वेश्चन ये चर्चा करिया पुनी चाहूची सो हम सोते जे सब डिस्कशन कले ए जे हमें यूनिटी और डायमेंशन ऑफ टॉर्क और डिस्कशन करिन सो एठा गोटे पॉइंट ले मु लिखिया चाहूची यूनिटी एंड डायमेंशन यूनिटी ऑफ टॉर्क ले टॉर्क एबे ही कहली टॉर्क हैला ई मैग्नीट्यूड एबे कहूची P E sin थीटा where what is P? P is equal to सब जानी चाहिए 2LQ E sin theta बराबर 2 चार दिया यूनिट जो अच्छा है L माने डिस्टेंस यूनिट कौन अपने मीटर चार्ज माने कूलम E माने what is the meaning of E? E means force by charge that is Q so force को कहि परिबी न्यूटन चार्ज को कहि परिबी कूलम चार्ज को कहि परिबी कूलम so कूलम get cancel बंचियो कोन प्ले न्यूटन into meter will be the unity so in the same manner dimension so dimension can be calculated so dimension प्ले न्यूटन माने force माने mlt minus 2 force into meter माने प्ले l so मु कहि परिबी m l raised to the power 2 t raised to the 2 so that is the dimension of your torque so I think today I'll stop here next class I try to discuss the work done in rotating the dipole in an uniform electric field. Thank you. Bye bye.